Okay students, now we are going to solve our next numerical problem, chapter number 7, which is 7.6. I'm going to read the statement at your textbook, which is a block of mass 1.6 kg is attached to a spring with spring constant 1000 Newton per meter as shown in fig 7.14. आपकी बुक के अंदर इसकी जो है फिगर बनी हुई है. The spring is compressed through a distance of 2.0 centimeter. The block is released from rest. Calculate the velocity of block as it passes through the equilibrium position x equals 0 if the surface is frictionless. I repeat, a block of mass 1.6 kg is attached to a spring with spring constant 1000 Newton per meter as shown in fig 7.14, which is given at your book. The spring is compressed through a distance of 2.0 centimeter and the block is released from a rest. Calculate the velocity of block as it passes through the equilibrium position x equals 0 if the surface is frictionless. Okay students, the given data of this numerical problem we can write as a mass of block we are given mass of block, we can nominated is as m, 1.6 kg, spring constant is given as k, 1000 Newton per meter, and the maximum displacement we can write this maximum displacement is amplitude x naught, 2 centimeter is given, and we can convert this 2 centimeter into meters. For this sake we will divide this 2 by 100, so we can have after dividing 2 by 100 we can have 0.02 meter. And to find, what will we have to find out? We will have to find out okay students, we will have to find out velocity at mean position. Velocity at mean position which is v. velocity जो है v हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें गिवन में दिया गया है मास ऑफ ब्लॉक दिया गया है विच इज m 1.6 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया गया है 1000 न्यूटन पर मीटर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 सेंटीमीटर जिसे हमने कन्वर्ट किया है मीटर के अंदर. वेलोसिटी v जो है मीन पोजीशन के ऊपर जब हमारे पास x इक्वल हो जाता है 0, वहां पे हमने क्या करना है, हमने वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है अपने स्प्रिंग मैस सिस्टम का, जो कि आपकी बुक के अंदर भी इसकी डायग्राम जो बनाई गई है, आपकी जो बुक के अंदर डायग्राम जो है स्टेटमेंट के अंदर दी गई है 7.14 या 7.14. तो फॉर्मूला स्टूडेंट इसमें हम यूज करेंगे. फॉर्मूला we can write the formula for this velocity v equal x naught k over m. Now substituting the values, x naught is given as 0.02 and k is given as 1000 and m mass. स्टूडेंट यहाँ पे जो मैस है हमारे पास वो हमने जो यूज़ करना है, जो हमें गिवन किया गया है वो है 1.6 kg. तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद इन दोनों की रेशो लेंगे, रेशो लेके इसका इन दोनों की हमने क्या लेंगे 1000 ओवर 1.6 करेंगे, इसका हम लेंगे अंडर रूट, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 के साथ, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है 0.50 मीटर पर सेकंड. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. This is the required answer. What we will have to find out? We will have to find out here velocity at mean position v and at x0, mean to say when the spring mass is at 0, mass is at 0 position, then we will have to find out the velocity v. We have found velocity v by using formula v equal x naught under root k over m. Now substituting the values, we have 0.50 meter per second. Okay students, now we are going to find out, or we are going to solve our next numerical problem of chapter number 7, which is 7.7.
Okay, 7.7 numerical at your textbook is a car of mass 1300 kg constructed using a frame supported by a 4 springs. Each spring has a spring constant 20,000 Newton per meter. If two people riding in the car have a combined mass of 160 kg, find the frequency of vibration of the car when it is driven over a pothole in the road. Assume the weight is evenly distributed. I repeat, a car of mass 1300 kg is constructed using a frame supported by 4 springs. Each spring has a spring constant 20,000 Newton per meter. If two people riding in the car have combined mass of 160 kg, find the frequency of vibration of the car when it is driven over a pothole in the road. Assume the weight is evenly distributed. So in this numerical we have given the data. We can write as mass of car M1, which is given 1300 kg, mass of two people, which is combined mass, two people. We can write this mass as M2, which is 160 kg, mass of combined mass. Spring constant given. Okay, student, the spring constant is given as K with 20,000 Newton per meter. To find what we will have to find out, we will have to find out the frequency. To find, ओके स्टूडेंट्स, हमें जो है फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी वो फाइंड आउट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी फार्मूला, अगेन formula for frequency, which is f equals 1 over t, which is the reciprocal of the time period. First we will which is the reciprocal of time period. You can say that the frequency equals, frequency यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास. टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास t इक्वल 2 पाई m ओवर k. ओके स्टूडेंट, जब हम टाइम फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये रेसिप्रोक हो जाएगा, ये जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास k ओवर m. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. यहाँ पे अब स्टूडेंट हम बात करते हैं m की. ये m जो हमें दिया गया है ये इक्वल होगा, दोनों मैसेज को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास m आ जाएगा m1 प्लस m2. m1 हमें दिया गया 1300, M2 दिया गया 160, तो इस तरह टोटल हमारे पास जो M आ जाता है वो है 1460 kg. इन दोनों मैसेज को सम कर लेंगे, हमारे पास वो मैस हमने यहाँ पे पुट करना है. सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी F इक्वल 1/2 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, विच इज द वैल्यू ऑफ पाई, एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज गिवन 20,000. जबकि हमने अभी कंबाइंड टोटल मैस जो है फ्रेम एंड द पीपल एंड द कार, टोटल मैस हमने निकाला, वो हमारे पास आ गया है कितना, 1460. ओके स्टूडेंट, जब इसे हमने सॉल्व करना है, एक और चीज यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट, क्योंकि स्प्रिंग कितने आ रहे हैं, स्प्रिंग हमारे पास 4 आ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे k जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ. ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास 4 स्प्रिंग यूज किएंगे. हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो दिया गया है एक स्प्रिंग का, वो है 20,000. इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो इस तरह हमारे पास जो इसका आंसर आ जाना है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 6.28. जबकि इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे आएगा 576. इसे जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो f इक्वल आ जाता है हमारे पास 1.18 हर्ट्ज. So student, in this way we can find out the frequency.